Hello, today in Python series day 9 we are studied about the introduction to object oriented programming, classes, attributes, object, self variable, constructor and object creation practice, method, inheritance, overriding method, after that data hiding and abstraction. We are trying to cover unit 5 fully. In case any topic raised in unit 5, we are covering next lecture to create half an hour videos. Now, firstly, we are covering definition based. After that, some basic level coding questions, and at last, we are covering fully coding based questions from the all topics. Now, let's start our today's lecture. Now, starts what is object oriented programming? Object oriented programming is a way to organizing and designing the computer program to make them more more organized, easier to understand and reusable. At this core, OPS is about modeling real world object and their interaction in a computer program. After that, why we use OPS in Python? Using object oriented programming in Python provide numerous advantages including code reusability, organizations, and maintainability. By leveraging OPS principle, you can design robust and flexible software system that mimics real world ethics and interaction, making it easier to develop and maintain complex projects. Now, in basic language, what is object oriented programming?
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग स्टाइल है जिसमें हम रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को यूज करके प्रोग्रामिंग बनाते हैं। और ओप्स का यूज पाइथन में हम क्यों करते हैं? वाई यूज ओप्स इन पाइथन? क्योंकि जो कोड हम पाइथन में करते हैं, कोड को बार बार यूज कर सकते हैं, रीयूजेबिलिटी, और कोड को ऑर्गेनाइज रखते हैं। प्रोग्राम जो हम कर रहे होते हैं उसको मेंटेन करना इजी होता है, और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हम बनाते हैं वो भी बनाना इजी होता है, इसलिए हम लोग उप्स का यूज करते हैं। नाउ आफ्टर दैट we are studied classes and object. In OOPS, classes are like user-defined data type allowing you to encapsulate data attribute and operates method that are related to a specific concept or entity. A class is defined using the class keyword in Python. Example, if you were create a program for managing car, you could define a car class. This class would specify attributes like make, more, color, model, color, and method like accelerate and brake. Now, after that, what is object? An object is an instance of a class. Instance of a object is instance of class. It represents a specific occurrence in the class and contains the actual data defined in the class attribute. Now, say object in other word. An object is concrete representation of the abstract blueprint provided by the class. Now example related to object. An object of the car class could be particular cars such as Audi, Nissan and Volvo. Each car object would have its own unique attribute value separate from the other car object created from the same class. Now you can understand to see this diagram. In short word, क्लासेस क्या होते हैं? क्लासेस आर द ब्लूप्रिंट। क्लास सिर्फ बताती है कि ऑब्जेक्ट कैसे होंगे। इन दिस एग्जाम्पल फर्स्ट, कार की क्लास, कार क्या होता? कार क्लास जो बताती है हमें किसके बारे में? कलर, मॉडल और स्पीड और एक्सिलरेशन के बारे में। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? क्लास की रियल इंस्टेंस। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? क्लासेस की रियल इंस्टेंस। इफ क्लास, if we assume class is car, then Audi, Nissan and Volvo are the object. If we assume car is the class,
car is class. In class, attributes like model, color, and acceleration. But in if we assume car is the class and object is the Audi, Nation, and Volvo. Now see this diagrammatic class. Car is the class. Object Audi, Nissan, and Volvo are the object. After that, methods and attributes. In class, you can have both methods and variable. Functions is a class or method and they define the behavior or action of that class can perform. Variable is a class or the attributes and they represents the data across with the object of that class. Firstly, we are talking about method. Methods are the function defined within the class. They operates on the attribute can perform various action. Methods have self as their first parameters representing the object calling the method. In basic terms, मेथड वो फंक्शंस होती हैं जो ऑब्जेक्ट कोई काम करने के लिए यूज करते हैं, जो ऑब्जेक्ट को काम करने के लिए यूज करते हैं. एग्जाम्पल, कार इज द क्लास but in car they have various type of method: start, stop, acceleration, brake. ये सब मेथड्स हैं क्योंकि ये एक्शंस परफॉर्म करते हैं. ये सब क्या है? मेथड हैं. मेथड इसलिए हैं ताकि ये सब एक्शंस को परफॉर्म करते हैं. आफ्टर दैट we are talking attributes. Class attributes are shared among all instances of a class. They are defined within the class outside any methods and are the same of all object. Class variable are accessed using the class name class variable as though an instance of the class self class variable. Attributes एट्रीब्यूट्स किसी क्लास या ऑब्जेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. ऑब्जेक्ट्स किसी एट्रीब्यूट्स किसी क्लास या ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन या फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. लेट्स से car is the class. We are talking car is the class.
Or object in car class, object is the speed, brand, model. But in attributes we are talking the ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशंस क्या होते हैं, कैरेक्ट एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारी क्या था, कलर। तो कलर, कार की कलर को डिफाइंड कौन करेंगे, एट्रीब्यूट्स। कार कौन सी ब्रांड की थी, कार की मॉडल कौन सी थी, कार कितने स्पीड से चल रही है, तो ये सब क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स। अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एट्रीब्यूट्स एंड मेथड। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, डेटाज या प्रॉपर्टी। मेथड्स क्या होते हैं, फंक्शंस या एक्शंस को परफॉर्म करती है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, डेटा और प्रॉपर्टीज। इंफॉर्मेशंस कौन स्टोर करते हैं, एट्रीब्यूट्स इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। मेथड्स क्या परफॉर्म करते हैं, जो वर्क जो होते हैं वो कौन परफॉर्म करते हैं, मेथड्स परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एट्रीब्यूट्स, नेम, कलर, एज। मेथड्स के एग्जाम्पल, स्टार्ट, स्टॉप। Attributes, variables that store the properties of an object. But in methods, functions defined inside a class that perform actions of an object. Now after that, we are studied the four pillars of object oriented programming. Four pillars of OOPS, which are encapsulation, abstraction, inheritance. Firstly, encapsulation, after that, abstraction, in third, inheritance, fourth, polymorphism. These are the four pillars of OOPS: abstraction, encapsulation, inheritance, polymorphism. These four are the pillar of OOPS. What is encapsulation? Encapsulation is the principle of building data and methods that operates on that data within a single unit called a class. It allow the class to control the access to its internal data, ensuring that the data is not directly accessible from the outside of the class. Now, after that, abstractions is the process of simplifying complex system by representing the relevant characteristic and behavior without exposing the underlying implementation's detail in OOPS. Abstraction is achieving by creating abstract classes or interface that defines the structure and behavior of the object without specifying how those details are implemented.
Now, in simple term, abstraction allowed developers to focus on what an object does rather than how it does it. How it does. Now, after that, what is inheritance? Inheritance is the ability of a class to inherit attributes and method from its parent and base class. It allows you to create a hierarchy of classes where subclasses, child classes can inherit and exist the functionality of their parent class. Inherit, Inheritance promotes code usability. After that, what is polymorphism? Polymorphism means maniform and refers to the ability of an object to take a multiple form or to be created or to be treated as instance of their parent class. Polymorphism simplify code by promoting genetic programming and supporting the principle of write once use anywhere. In now tells in simple term, polymorphism allows you to a single method or functions name to perform different operation based on the context or type of data it operates on. इनकैप्सुलेशंस का मतलब ये हो इनकैप्सुलेशंस का मतलब है कि डेटा और मेथड्स को एक ही क्लास के अंदर रखना और डेटा को डायरेक्ट एक्सेस से प्रोटेक्ट करना। डेटा को हाइड और सिक्योर करना और उसको सिर्फ मेथड के थ्रू एक्सेस करना ही इनकैप्सुलेशन होता है। डेटा को हाइड और उसको सिक्योर करना और उसको मेथड्स के थ्रू एक्सेस करना इनकैप्सुलेशंस होता है। नाउ encapsulations real life example is ATM machine. How ATM machine is the example of encapsulations? हम लोग अपने बैंक बैलेंस को डायरेक्टली नहीं देख पाते हैं या फिर उसके पिन चेंज भी नहीं कर पाते हैं। पहले पिन इंटर करना पड़ता है। सिर्फ ऑथोराइज्ड वे से बैलेंस चेक या विड्रॉ कर सकते हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ encapsulation. What are the advantage of encapsulations? अनऑथोराइज्ड एक्सेस से डेटा को हमारी प्रोटेक्ट करते हैं। डेटा सिक्योरिटी, these are the advantage of encapsulations.
Now after that, abstraction. Abstractions का मतलब ये होता है कि इंफॉर्मेशन दिखाना और अननेसेसरी डिटेल्स को हाइड करना। जो मेन इंफॉर्मेशन है उसे आगे शो करता है, बाकी जो अननेसेसरी थिंग्स जो होते हैं उसे हाइड कर देता है। इट मीन्स यूजर्स को सिर्फ जो इम्पोर्टेंट जो होते हैं उस चीज को आगे शो आउट करते हैं, बाकी जो अननेसेसरी जो होते हैं, अननेसेसरी डिटेल्स जो होते हैं उसे हाइड कर देते हैं। देन दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। रियल लाइफ एग्जांपल, कार। जब आप कार स्टार्ट करते हैं तो सिर्फ स्टार्ट बटन दबाते हो, आपको ये जानने की जरूरत नहीं होती कि इंजन कैसे स्टार्ट हुआ, फ्यूल कैसे सप्लाई हुआ, बैटरी कैसे काम कर रही। सिर्फ स्टार्ट बटन यूज करते हो, देन दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। नाउ इन शॉर्ट टर्म, जब हम लोग किसी कार को स्टार्ट करते हैं तो हम उसमें चाबी देते हैं और वो स्टार्ट हो जाती है, बट हम उसके अंदर की फंक्शंस को तो नहीं देखते हैं कि वो कैसे स्टार्ट, किस तरह से उसकी इंजन चल रही, कितने फ्यूल यूज हो रहे हैं, कैसे फ्यूल यूज हो रहे हैं। देन दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। नाउ नेक्स्ट टर्म, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? दे आर सिमिलर एज पेरेंट, क्लास और चाइल्ड। इन शॉर्ट टर्म, एक क्लास दूसरे क्लास के फीचर्स को रीयूज करते हैं तो उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल, द रिलेशन बिटवीन फादर एंड सन। सन और फादर्स की कुछ क्वालिटियां इनहर्ट करती हैं, इट मीन्स मैच करती है, जैसे हाइट, आई साइट, सरनेम। देन दिस इज द वन एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंस। आफ्टर डेट, नेक्स्ट हम पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि एक नाम और कई फॉर्म, वन नेम मेनी फॉर्म। एक ही मेथड या फंक्शंस अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग तरीके से काम करते हैं, जिसे हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल्स इज व्हीकल्स। जितने भी व्हीकल्स होते हैं सारे की मेथड मूव करने की मेथड मूव करना ही होता है।
जैसे कार हम लोग रोड पे चलाते हैं, बोट को हम लोग पानी में चलाते हैं, एरोप्लेन हवा में उड़ती हैं। कहने का मतलब कि हम लोग सारे का यूज एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए करते हैं, मूव करने के लिए ही करते हैं। तो देन दिस इज कॉल्ड पोलीमॉर्फिज्म। वन नेम मेनी फॉर्म। Now after that, we are studying about the class. A class in Python involves creating a blueprint or template for creating object of that class. It defines the structure, attributes, and behavior of object that will be instanted from the class. Class is the blueprint or template for creating object of that class. Class are the blueprint or template for creating the object. Syntax: firstly class name, after that class attributes, class name, class method, after that define class method, now after that class attributes. Inside the class, inside the class body, you can define class attributes. If needed, class attributes are shared among all instances created from the class and the accessed using the class name. And what is class method? You can define class method within the class to specify the behavior of the class. Class method are similar to regular functions, but they operate on the class itself and can be accessed. Class method have the self parameter as the first parameter to access class attributes and other method. Now after that, what is class constructor? Class constructor in Python are special methods that are automatically called when you create an instance object of the class. The constructor method is denoted by init, and it allows you to initialize the attribute of the object with values passed as argument. During installation, constructors are essential for setting up the essential of the object, ensuring that it is valid and usable state when it is created. The syntax of class constructor: firstly class name, after that define def init self parameter true, initialize instance variable attributes there. Class constructor is denoted by init. After that,
Access modifier. In Python, access modifier are used to control the visibility and accessibility of the class, attribute, and method. They determine how the attributes and method can be accessed from the outside of the class or within the class hierarchy. Python provides three types of access modifier: public, private, and protected. Public, private, and protected. There are three types of access modifier in Python, which are public, private, and protected. What is public access modifier? There is no strict implementations of public access modifier. By default, all attributes and methods defined in class are considered public and they can be accessed from both inside and outside of the class. The syntax of public access modifier: firstly class name, after that def public method, this is public method, after that pass, and then define init method self.public attributes. This is public attributes. Both public method and public attributes are accessible from outside the class. Then this is called public access modifier. After that, protected access modifier. In Python, an attributes or method prefixing with a single underscore protected access modifier can be denoted as single underscore, while private access modifier can denote a double underscore. However, it is convention that indicates that attributes or method in for internal use within the class or its subclasses, class or subclasses, and should be not accessed directly from outside the class. Although protected method and protected attributes can be accessed from outside the class, it is recommended to use them only within the class or its base class. Now after that, private access modifier. In private access modifier is denoted double underscore. An attributes or method prefixed with a double underscore, it is considered private. It is not directly accessible from outside the class, and attempting to access it will raise on attribute error. Both public method and public attribute cannot be accessed from outside the class. After that, we move to the next topic: method overriding. मेथड ओवरराइडिंग तब यूज हम लोग करते हैं जब चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के सामने मेथड को अपने तरीके से
दोबारा डिफाइन करते हैं। चाइल्ड क्लास पेरेंट्स क्लास के सामने इंस्टेड ऑफ मेथड्स को अपने तरीके से दोबारा डिफाइन करते हैं। टेकिंग वन एग्जांपल, one parent say, I travel by bus, but child say, I travel by bike. Parents and child should wants both travel different way. दोनों का ट्रेवल मेथड दोनों का मेथड ट्रेवल है, लेकिन चाइल्ड अपने वर्जन यूज करते हैं और पेरेंट्स अपने वर्जन यूज करते हैं। इट मीन्स दोनों अलग अलग वर्जन यूज करते हैं, तो उसे हम लोग मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं। Now we are covering all the theoretical portion related to this unit. Introduction to OOPS, class attributes, object, constructor, method, inheritance, overriding, data hiding and abstractions. After that, in rest time, we are covering some basic example related to such related to these topics that we are studied. Firstly, we are covering the basic examples of class objects. Now, see example. Class student, see, run the code. Output is coming. Name Ankit and age 20. Here in this code, class
Student. Student is the class. After that, name and age are the attributes. Display the method. Display method. After that, S1 and S2 are the object. S1 dot display method call and S1 equal to student object and again method call. This is the example of object and class. Now after that, see next example related to class and object. Class car brand Toyota. After that, define run this code. Here in this code, class car. After that, object Toyota. After that, method. After that, car object and then car one call. Now, firstly, we are understand
Now, firstly, one basic example is related to class and object. How we understand this is class or this is object? From definition based, you are understanding, but in coding questions, how they are understand class, car, car 2. After that, print which type of one. Now, here in this code, car is the class. This is class. After that, car 1 is the object, and car 2 is the also object. Here in this example, car is the class and car 1 or car 2 is the object. Now again, we see next other example related to class and object. Class student. After the def, in it, and after that a different display. And again print name.
Here in this code, name Ankit and age 20. These are the object. In this code, students is the class, name and age are the attributes. Name and age are the attributes. After the display method, and again S1 students Ankit, commas 20. These are the objects. After that method call display and again method call. After that, one more example related to object and class. Class mobile. Now, firstly, we take class mobile. After that, brand and price are the attributes. After that, show method. After that, M1 is the object. After that, M1 is the object. Now, here in this code, brand Samsung and price 25,000 are the object.
are the output. Here the outputs: brand Samsung, price 25,000. Mobile is the class. After that, say brand and price are the object. Brand and price are the attributes. After that, so methods, M1 object, and after that last call. Here Samsung and brand Samsung, price object, price 25,000 are the object. Now from today we are covered first portion theoretical, after that some coding questions based on class and objects. After that we are covering the 10th lectures based on today's we are covering those topics. Based on we are covered next day coding questions. So next day we meet again in the 10th lecture.